Hello friends, welcome all of you to the Fundamental Pharmacy. Again, I have come up with a new video for you, that is Cracker MCQ series part 6. So that is very important for your upcoming exams like GPAT 2021, particularly Niper DI Pharmacist and other pharmaco-competitive exams. Let's start the Cracker MCQ series part 6. Before that, I would like to request you, this video is going to be very important, knowledge oriented and helpful for these pharmaco-competitive exams. So please watch the complete video. It's my humble request to please watch the. Without wasting time, I would like to start the session. But before that, I would like to request one more thing. If you think the content of video is good, please like it, share this video with your friends, and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that whenever I will upload any video on channel, you will get instant notification of that. So let's start the. Today's video is following drug acts by enzyme inhibition except. And your options are captopril, physostigmine, omeprazole and adrenaline. Okay, so out of these, here your correct answer is option D. How? I will explain. What is the question exactly? Following drug act by enzyme inhibition except, remember, except captopril, physostigmine, omeprazole and adrenaline. So what is captopril? So captopril is an antihypertensive agent. It is used to decrease the blood pressure. Okay, it belongs to category of ACE inhibitors. ACE means what? Angiotensin converting enzyme inhibitors. So it will inhibit a particular enzyme. Okay, clear? It will inhibit the ACE. So what is role of ACE? Angiotensin converting enzyme is involved in the conversion of your angiotensinogen to the angiotensin second, which is a decapeptide. Which is a decapeptide. Okay, and that angiotensin second is a potent vasopressing agent that will increase your blood pressure. So that's why it is used as an antihypertensive. You should remember the structure of captopril. In that, which amino acid is present? So captopril, in that proline amino acid is present. Captopril is eliminated. Okay, it acts by enzyme inhibition. So let's come to the second option. What is physostigmine? Physostigmine is a reversible anticholinesterase. Okay, it is a reversible anticholinesterase. What do you mean by it? It will inhibit the acetylcholinesterase enzyme. It will inhibit the acetylcholinesterase enzyme. So again, it is also enzyme inhibitor. It acts by inhibition of acetylcholinesterase. What is the role of your acetylcholinesterase enzyme? So it will metabolize. It will cause hydrolysis of acetylcholine. So what is the hydrolysis product of acetylcholine? That is nothing but the choline base and acetic acid. Acetylcholine after hydrolysis will result in choline base and your acetic acid. Okay. So physostigmine is a reversible anticholinesterase. This physostigmine is eliminated. Now come to the omeprazole, third option. So what is omeprazole? It is a proton pump inhibitor. Okay, it is a proton pump inhibitor used as a anti-secretory agent. It will prevent the secretion of gastric acid in your stomach. So which is a proton pump inhibitor. So what is the role of proton pump? You should know. Hydrogen potassium ATPase pump. That is known as a proton pump. So what is the role of that proton pump? That will generate a hydrogen. Which then combine with a chloride ion to form a hydrochloric acid. So proton pump is the last step for formation of acid in the stomach. Okay, all the proton pump inhibitors like omeprazole, rabeprazole, then pantoprazole, esomeprazole, dextromethorphan, they all inhibit the proton pump. Okay, so they will prevent the formation of acid. Okay, so again, omeprazole is also acting via inhibition of particular enzyme, that is hydrogen potassium ATPase pump. Okay, ATPase means that is also enzyme. So it also acting via enzyme inhibition. So first three options are eliminated. Now what? Adrenaline. So what is adrenaline? Adrenaline is nothing but it is a neurotransmitter of sympathetic nervous system. Now this adrenaline will act via different types of receptors. Okay, alpha receptor, beta receptors. Okay, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3. Their locations also you have to remember. Their actions also you have to remember. Adrenaline will act via its receptor. Okay, so it will not act via inhibition of any enzyme. Okay, so captopril, physostigmine, omeprazole, they are inhibiting a particular enzyme. They are inhibiting the enzyme. They are acting by inhibiting the enzyme, but not adrenaline. Okay, is that clear? So in this case, your option D is the correct answer. Now we will see the next question. So what is the next question? A partial agonist has the following characteristic except, and your options are, आपके options क्या है? Option A has equal or less affinity as like agonist. Option B has a less intrinsic activity. Option C has a equal intrinsic activity as like agonist. And option D, it produces
less pharmacological effect. So out of these options, your option C is the correct answer. Here your option C is the correct answer. I will explain, don't worry. You know that there are different kind of agonist. Okay, so drugs will act as either agonist or antagonist. There are different kind of mechanism of drug action. Either a drug will stimulate, either drug will inhibit, either drug will cause irritation, either drug will alter physiological function by acting as on a specific biological receptor. Okay, so it may act as an agonist, it may act as an antagonist. So in that also, in agonist also, there are three type of agonist: full agonist, partial agonist, and inverse agonist. So what do you mean by agonist? Agonist is a drug that will combine with the receptor and will produce pharmacological effect. Okay, agonist क्या करेगा? agonist रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा. ठीक है, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट. तो एगोनिस्ट के भी सब टाइप्स होते हैं: फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट. सो फुल एगोनिस्ट क्या करेगा? फुल एगोनिस्ट will also combine with the receptor. It will have a high affinity towards the receptor and it will produce a pharmacological effect, desired pharmacological effect. That means intrinsic activity. So your full agonist will have high affinity as well as high intrinsic activity. Remember. Then come to the partial agonist. चलो partial agonist क्या करता है वो भी देख लेते हैं. तो partial agonist क्या करता है? partial agonist भी रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है, उसको भी एफिनिटी ज्यादा होती है, उसको भी हाई एफिनिटी होती है लाइक एगोनिस्ट. लेकिन वो क्या करता है? इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोलते हैं जिसको अपन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं. वो पूरा के पूरा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखाता, वो सिर्फ पार्शियल दिखाता है. ओके, सो पार्शियल एगोनिस्ट विल आल्सो हैज अ high affinity to the receptor. It will combine with the receptor and it will not produce full response. It will produce only partial response. It will produce only partial intrinsic activity. It will have only low intrinsic activity. That is the partial agonist. Now what do you mean by inverse agonist? So inverse agonist क्या करेगा? वो भी रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाएगा लेकिन वो अपोजिट इफेक्ट दिखाएगा. It will show opposite intrinsic activity. That is known as a inverse agonist. Is that clear? ये different agonist कौन से होते हैं? फुल एगोनिस्ट क्या करता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है. नाउ अगेन देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट. सो एंटागोनिस्ट क्या करेगा? सो एंटागोनिस्ट इज अ that will combine with the receptor and that will prevent the actions of receptor that has no intrinsic activity. Okay, full agonist will have high affinity, high intrinsic activity. Partial agonist will have high affinity but partial intrinsic activity. Inverse agonist will have high affinity but opposite intrinsic activity. Then antagonist will have high affinity and no intrinsic activity. Okay, so is that clear? So you can see here there is one graph. There is a log dose on x-axis and effects on y-axis. So this red line, the first, that is a full agonist. It has a affinity towards the receptor and it has a intrinsic activity also. Again, second that is a second. What is second? Second is a orange line. Orange line is it is also having affinity to the receptor but less pharmacological activity. That is nothing but the partial agonist. Then what about the antagonist? Antagonist also has a affinity towards the receptor but it will block the actions. It has no intrinsic activity. Okay, so that is antagonist. Then what is inverse agonist? Inverse agonist also has a same affinity to the receptor but it has a opposite pharmacological action. That is nothing but the inverse agonist. Is that clear? So in this case your option C is the correct answer. अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Type B adverse reaction includes following except, and your options are option A augmented or attenuated or quantitative, option B idiosyncratic, option C immunological adverse reaction, then option D genetic mediated or unknown mechanism reactions. Type B adverse reaction includes following except. In this case your answer is option A. Correct answer is option A. So how I will explain. What are the different type of adverse reaction? So basically you should know what is adverse reaction. आपको adverse reaction क्या होता है ये मालूम होना चाहिए. So adverse reaction is nothing but the any response to a drug that is noxious and unintended that occurs at a dose usually in the therapeutics for the prophylaxis, diagnosis, therapy of disease. So adverse reaction क्या होता है कि adverse reaction वो होता है कि जो आप जिस चीज के लिए आप ड्रग ले रहे हो वो छोड़ के दूसरा कोई एक्शन अगर मिल रहा है आपको, that may be either beneficial or harmful, that is known as adverse reaction. अगर आप
एस्पिरिन ले रहे हो प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रिवेंशन के लिए, लेकिन आपको दूसरा ही कुछ प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज नथिंग बट द एडवर्स रिएक्शन। कि आप जिसके लिए ले रहे हो उसने उतना ही एक्शन दिखाना चाहिए। अगर आप पैरासिटामोल हेडेक के लिए ले रहे हो तो उसने एनाल्जेसिक एक्शन ही दिखाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखाना चाहिए। अगर दूसरा कुछ दिखाया तो उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। दैट इज एनी रिस्पॉन्स टू ड्रग दैट इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड and that occurs at a dose of therapeutic dose that is given for prophylaxis, diagnosis and treatment. Okay, that is known as adverse reaction. उसमें कितना होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे साइड इफेक्ट हो गया, अनटोवर्ड इफेक्ट हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, या फिर एलर्जिक और इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट हो गया। कितना टाइप होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन? देयर आर 4 टाइप। Type A adverse drug reaction, type B adverse drug reaction, type C, type D. Okay, so what do you mean by type A? Type A adverse drug reactions are also known as augmented, attenuated or quantitative adverse drug reaction. And remember, type A adverse drug reaction are nothing but they are because of extension of pharmacological response. Extension of pharmacological response. हाँ, obviously इसका एक example देता हूँ मैं आपको. For example, let's take example of insulin. That you have high blood sugar level and you want to decrease the blood sugar level. So you are using insulin in the diabetic. So insulin क्या करेगा आपका? So what will insulin do? It will decrease the blood sugar level. Okay. But if it decreases the blood sugar level up to a normal, then it's okay. But आप अगर insulin का high dose लेंगे, if you are using high dose of insulin, so it will decrease your blood sugar level up to below the normal level. So normal sugar level क्या होता है आपका? 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो उससे भी कम इंसुलिन बॉडी का, उससे भी कम अगर शुगर लेवल करेगा आपका, तो दैट इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया। सो हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस्ड बाय इंसुलिन इज नथिंग बट द टाइप ए एडवर्स रिएक्शन, दैट इज augmented, quantitative or attenuated or dose related. Okay, so you are taking insulin for decrease the blood sugar level up to normal, but you have taken more dose, and that's why insulin will decrease your blood sugar level below the normal level. Okay, then that will result in hypoglycemia. That is nothing but the type A adverse drug reaction. And what are the type B? Type B adverse reaction are known as a Beezer type adverse drug reaction. Okay, so Beezer type, they are not a pharmacological action, they are not a extension of pharmacological action, they are other effects. Okay, like idiosyncratic reaction, immunological adverse reaction, genetically mediated reactions, all these are the type B adverse reaction. Okay, then what are type C? Type C is known as chronic adverse drug reaction. Okay, so type C is known as chronic adverse drug reaction, type B is known as delayed type of adverse drug reaction. So in case of type B, either they might be dose related, they might be unknown origin, they might be your immunological, they might be different types. Okay, so type B reaction includes idiosyncratic, immunological and genetic mediated. So here option A is the correct answer. ठीक है, आपका type A क्या है? Augmented, attenuated और quantitative. ठीक है, so ये option A is a type A. One of the following is not a type B. So your option A is the correct answer. Okay, now next question. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। योर ऑप्शंस आर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइवेलेंस ऑफ द प्रोडक्ट, देन डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल स्टडी, देन नन ऑफ द अबव। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेज 4? कि स्टेज 4 जो होता है क्लिनिकल ट्रायल का, उसमें क्या नहीं इंक्लूड करते, ये क्वेश्चन है। तो हियर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन कैसे? आई विल एक्सप्लेन कि क्यों होता है ये। सो क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको मालूम है देयर आर डिफरेंट फेजेस और देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। व्हाट आर दोज? देयर आर 4 फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज 3 एंड फेज 4। ओके, सो फेज फर्स्ट इज नोन एज अ थेरेप्यूटिक एक्सप्लॉयटेशन। रिमेंबर, थेरेप्यूटिक एक्सप्लॉयटेशन, फेज फर्स्ट इज नोन एज अ थेरेप्यूटिक एक्सप्लॉयटेशन। क्या करते हैं उसमें कि थेरापेटिक कोई अगर ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट है क्या नहीं, वो चेक करते हैं। ओके, सो इन फेज फर्स्ट वी यूज टू इन्वेस्टिगेट द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग एंड मेन एम इज टू आइडेंटिफाई द सेफ डोज ऑफ दैट ड्रग कैन बी यूज्ड इन ह्यूमन। So that is known as a therapeutic exploitation. Second phase, that is known as a therapeutic confirmation. Okay, second phase is known as a therapeutic confirmation, and in that case, in that phase, we used to investigate the safety of drug, then dose selected for the use in humans, looks for the sign of efficacy. That is nothing but the
therapeutic confirmation. What is phase 3? Phase 3 क्या होता है? Phase 3 is known as safety and efficacy. In this phase 3, we majorly focus on the safety and efficacy of the drug. So in phase 3, investigation is done for both safety and efficacy of the selected dose, often comparing with the standard treatment. Again, phase 4 क्या होता है? Phase 4 is known as a post-marketing surveillance. Okay, so in that we used to investigate long-term effectiveness, benefits and cost effectiveness of drug, long-term adverse effect of drug. That is measured in the phase 4. That is known as a post-marketing surveillance. Okay, so ये होता है phase different phases of clinical trials. जो फोर्थ फेज होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. इन दैट वी यूज्ड टू डू मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ओके, जो भी आपका डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड या फिर आपका प्लासिबो स्टडी है, जितने भी स्टडी है वो सब फेज 1, फेज 2, फेज 3 में करते हैं. फेज 4 में कोई स्टडी नहीं होता है. फेज 4 में सिर्फ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग होता है या फिर कोई कंप्लेंट आता है उसको हैंडल करते हैं. तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. दैट इज नथिंग बट द डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल. डबल ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग फेज 4 में आता है. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडी नहीं आता. इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द इसेंशियल ड्रग? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इसेंशियल ड्रग एंड योर ऑप्शंस आर दे आर essential for treatment. Option B, they listed by WHO in essential drug list. Option C, both of these. Option D, none of the above. In this case, your option B is the correct answer. Option B is the correct answer. I will explain the answer. Don't drugs. What do you mean by essential drugs? So essential drugs are those drugs which will satisfy the healthcare needs of majority of population. So those are the essential drugs are the drugs those will satisfy the needs of majority of population. So बहुत सारे लोगों में जो important drugs लगते हैं उसको बोलते हैं essential drugs. So those drugs which will satisfy the healthcare need of majority of population, those are known as essential drugs. और essential drug का definition किसने दिया है? So WHO has to define the meaning of essential drug. It is listed by WHO in the essential drug list. That is nothing but the essential drugs. So उसमें भी essential drugs जो होते हैं, क्यों? What is the purpose of essential drug? They should therefore be available at all the times in adequate amount and appropriate dosage at the price of individual and community can afford. Okay, so essential drugs are nothing but the drugs they used to satisfy the healthcare need of majority of population, and they should be available, they should be affordable, etc, etc. So essential drug list is made by WHO. Okay, remember. And the list is also made by in the 2 levels. That is, first one is a core list, complementary list. In the core list, the minimum drug need for the basic healthcare system is included and listed, and most of them are cost effective. The second, that is complementary list, it consists of drugs for priority of disease which are cost effective but not necessarily affordable. So that is nothing but the essential drug. They are defined by WHO. So list given by WHO in the essential drug list, that is nothing but the essential drug. Is that clear? Essential drug क्या होता है कि वो ड्रग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ट्रीटमेंट के लिए essential है, मस्ट है. जो ड्रग्स है वो ड्रग होते हैं कि जो पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड के लिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड के लिए सेटिस्फाई कर दे, उसको बोलते हैं essential drug list. और वो WHO बनाता है essential drug list, और वो जो भी ड्रग WHO essential drug list में आता है उसको बोलते हैं essential drug. What do you mean by orphan drug? What do you mean by orphan drug? Okay, option A is used for diagnosis, prevention and treatment of rare diseases, and option B, they are of unknown origin. Then option C is they are drugs whose mechanism is unknown, and option D, none of the above. So what are the orphan drugs? So orphan drug is defined as the drug used for the diagnosis, treatment, prevention of rare diseases. जो rare disease होता है उसके लिए जो drugs use करते हैं उसको बोलते हैं orphan drugs. Okay, I will explain you with the one example. So you might have heard about the amantadine. Amantadine नाम का एक drug होता है. Actually it is an antiviral drug, amantadine. But this amantadine is also approved in various countries as an orphan drug for the treatment of various like rare diseases like ataxia, cerebral ataxia,
then muscular dystrophy, then your multiple sclerosis. सो ये जो रेयर डिसीज होते हैं उनके लिए अगर कोई ड्रग अप्रूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग. ऑर्फन मीन्स क्या? व्हाट डू मीन बाय ऑर्फन? ऑर्फन मीन्स लावारिस. तो ये जो ड्रग होता है वो रेयर डिसीज जो होता है, जैसे आपका बहुत रेयर डिसीज, जेनेटिक डिसीज हो गया, कोई जेनेटिकली मीडिएटेड डिसीज हो गया, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, जैसे आपका एटेक्सिया हो गया, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया. मोस्ट ऑफ द जेनेटिकली मीडिएटेड डिसीज दे आर इन द रेयर डिसीज. Okay, so those rare disease they are treated by orphan drug, जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है उस डिसीज का. रेयर डिसीज बहुत सारे पॉपुलेशन में ही है, कोई कुछ लोगों में वो डिसीज है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो ऑर्फन ड्रग उसके लिए यूज करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग? ऑर्फन ड्रग्स आर द ड्रग्स meant for the diagnosis, prevention and treatment of rare disease. Okay, they are not easily available because their manufacturer is not commercially available. They are known as orphan drugs. Okay, some examples of orphan drugs are certain anti-cancer, antiviral drugs, certain chemotherapeutic agent like pentamidine, and the drugs used in the treatment of genetic enzyme deficiencies. So that is known as orphan drugs. Example of orphan drug, I will take an example. Rituximab. Okay, so rituximab is an anti-cancer drug that is used as an orphan drug in various other rare diseases. Rituximab is the world's second topmost profitable drug that is used as a orphan drug in a various other conditions. Okay, again there are a lot of drugs that those are used as a orphan drug like rituximab, then ranibizumab, then lenalidomide, etc. Etiminab, mesylate, all these drugs are the examples of orphan drug. These orphan drugs, they are used to treat rare diseases. Most of them are genetically mediated diseases. Here your correct option is option A. Okay, orphan drugs are used to treat the rare. And now next question, we'll take next question. So which statement is true about the disulfiram? And your options are: it is used to treat the alcohol dependence. Treatment should be carried out in a hospital. Disulfiram inhibits the aldehyde dehydrogenase, and option D, all of the above. So which statement is true about the disulfiram? So here your all of the above is the correct answer. Disulfiram is also known as anti-abuse. Okay, so it is a drug used in the treatment of alcohol dependence. So जो बेवड़े लोग होते हैं, जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं ज्यादा, इन्हीं की लत छोड़ने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं disulfiram. So we will see how disulfiram will. Before that you should know how ethanol is metabolized in the body, how alcohols are metabolized in the body. So most of the जो भी वाइन्स होते हैं, जो भी लिकर होते हैं, तो उनमें इथेनॉल ही होता है. अगर उसमें मिथेनॉल हो गया तो फिर पॉइजनिंग हो जाएगा. ओके, सो इथेनॉल ही होता है उसमें. सो बॉडी में इथेनॉल कैसे होता है? सो योर बॉडी यूज टू मेटाबोलाइज द इथेनॉल इन द फॉलोइंग ऑर्डर. यू कैन सी इन द this diagram. So here is they have given methanol. Okay, so methanol is metabolized by alcohol dehydrogenase enzyme. Ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase enzyme that will convert into acetaldehyde. Now this acetaldehyde further converted into acetic acid by aldehyde dehydrogenase. Okay, sequential conversion of ethanol in the acetic acid or acetate is done by alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase. Now this disulfiram, what it does, it will inhibit the aldehyde dehydrogenase enzyme. So what will happen? अगर आपने वाइन पी या फिर इथेनॉल ड्रिंक की और आपने डाइसल्फिरम लिया, या फिर आपने डाइसल्फिरम लिया है और उसके बाद में आपने वाइन वगैरह पिए, तो उसमें क्या बात क्या होगा कि आपका जो इथेनॉल है मेटाबोलाइज हो जाएगा अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की, आपके इथेनॉल का कन्वर्जन हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में. और नॉर्मली बॉडी में एसिटाल्डिहाइड बाद में कन्वर्जन होता है, लेकिन आपने डाइसल्फिरम खाया है, ठीक है, वो डाइसल्फिरम क्या करेगा? इट विल इनहिबिट द अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज. अगर डाइसल्फिरम इसको इनहिबिट कर देगा तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा. अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का क्या काम है? उसका काम है कि एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट करने का एसिटिक एसिड में या फिर उसका एसिटेट में कन्वर्जन करने का. लेकिन आपने तो डाइसल्फिरम लिया वाला है, तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड आपके बॉडी में जमा होना चालू हो जाएगा. तो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड. इफ यू टेक डाइसल्फिरम, it will inhibit aldehyde dehydrogenase
and there will be accumulation of acetaldehyde. Now this acetaldehyde will cause nausea, vomiting, palpitation, blurred vision, dyspnea. So this accumulation of acetaldehyde will result in these symptoms like nausea, vomiting, palpitation, ब्लड विजन, डिसअपनिया. ठीक है, ये एसिटाल्डेहाइड ये सिम्टम्स दिखाएगा. आपको तकलीफ होगी, बहुत सारी तकलीफ होगी. आपको वोमिटिंग होगा, पल्पिटेशन होगा, डिसअपनिया होगा, आपका हार्ट रेट कम ज्यादा होगा. ये सब होने की वजह से क्या करता है आदमी, यार नहीं ये सब होता है दारू पीने की वजह से, दारू छोड़ देता है. ठीक है, इट विल लीव द ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ दैट डाइसल्फिराम. ठीक है, ये डाइसल्फिराम का मैकेनिज्म अच्छा है. दैट्स व्हाई डाइसल्फिराम इज नोन एज एंटाबिस. ओके, एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस. एंड यू नो दीज सिम्टम्स दे माइट बी फेटल. ये जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स आपकी जानलेवा भी हो सकते हैं. उसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है, दिस ट्रीटमेंट शुड बी कैरिड आउट इन द हॉस्पिटल विदाउट मेडिकल सुपरविजन. आपको डाइसल्फिराम नहीं देना है किसी को. ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट मेडिकल में ही, मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही आपको करना है, क्योंकि ये सब जो सिम्टम्स है इट कैन बी फेटल. यू नो डाइसल्फिराम इनहिबिट द अल्कोहल डिहाइड्रेशन. सो इन दिस केस your option D is the correct answer. Is that clear? Now we'll take next MCQ. Surgical procedure is carried out in which stage of anesthesia? And your options are stage 1st, stage 2nd, stage 3rd, stage 4th. And your correct answer is stage 3. Correct answer. Option C is the correct answer. I will explain. What are the different stages of surgical anesthesia? What are the different stages of anesthesia? So there are different stages. Stage 1 that is known as analgesia. Stage 2 that is known as delirium. Stage 3 that is known as surgical anesthesia. Stage 4 that is known as रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. ओके, क्लासिकल एनेस्थेटिक एजेंट दिया है जो क्लासिकली यूज करते हैं, जो जैसे आपका पिनोबार्बिटन हो गया, या फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या फिर आपका डाइथाइल हो गया. तो वो एनेस्थेटिक एजेंट में ये 4 स्टेज दिखाई देते हैं. स्टेज 1 इज एनाल्जेसिया. सबसे पहले जब भी आप एनेस्थेटिक एजेंट दोगे, आपका पेन सेंसेशन चला जाएगा. यू विल नॉट have a sensation of pain. That is known as stage 1. Stage 1 is known as analgesia. Stage 2 is known as delirium. जैसे ही आप anesthetic का डोज बढ़ाओगे, patient will go into the stage 2. That is known as a stage of delirium. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, पेशेंट का एक्साइटमेंट हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है, पेशेंट एक पगले की तरह बिहेव करने लगता है. एक्साइटमेंट होता है, वो थोड़ा सा पगले की तरह. What happens in the stage 2? It is known as a stage of delirium or excitement. And what happens in this stage? जैसे ही आपका एनेस्थेटिक का ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, it will depress your CNS, it will depress your brain. So जैसे डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के एक लेवल होता है. सबसे पहले आपका सेरेब्रल मतलब जो हायर सेंटर्स है, जो लोअर सेंटर सेरेब्रम में जो डिप्रेस हो जाएगी और उनका कंट्रोल आपके ब्रेन से छूट जाएगा. उसके बाद में हायर सेंटर, आपके जो हायर सेंटर से वो डिप्रेस हो जाएगी. तो लोअर सेंटर डिप्रेस होने की वजह से क्या होता है, जो भी आपका मूड चेंज होता है, या फिर आपका रोना आता है आपको, या फिर चिल्लाओगे आप, या फिर एक्साइटमेंट होगा, डेलिरियम होगा, आपके मसल हाथ पैर मारोगे आप, मतलब पगले जैसे बिहेव करोगे कुछ टाइम के लिए. ये होता है स्टेज 2 में. क्यों होता है ये सब? क्योंकि लोअर सेंटर्स हैव लूज देयर कंट्रोल. लोअर सेंट्रल जो होते हैं वो सब कंट्रोल लूज होता है उसका, तो उसकी वजह से ये सब मैनिफेस्टेशन होता है. दैट इज अ स्टेज 2. स्टेज 3 में क्या होता है, फिर से जो पेशेंट है वो स्टेबल होता है. उसके जो हायर जो सेंटर्स होते हैं, जैसे पेन सेंटर, जैसे ये मूड सेंटर, जैसे आपका थिंकिंग बिहेवियर, वो सब डिप्रेस हो जाता है. और स्टेज 3 में सिर्फ आपके वाइटल जो फंक्शंस है, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर इज देयर, पिल्स रिएक्शन इज देयर, ये उतना ही आपको 3rd स्टेज में रहता है. सो स्टेज 3 इज नोन एज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया. वो स्टेज 3 में भी डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4. इस स्टेज में क्या होता है कि आपका मस्कुलर रिलैक्सेशन इज एडिक्वेट, ब्रीथिंग इज नॉर्मल. ठीक है, आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, आपका प्यूपिल भी रिएक्टिव होता है थोड़ा सा. तो ये होता है स्टेज 3 में. बाकी के सब सेंसेशन गए आपके, मतलब यूरिन सेंसेशन, ये सेंसेशन, वो सेंसेशन सब गए, टच सेंसेशन, सब टच सेंसेशन, पेन सेंसेशन, सब कुछ लॉस होता है. सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहता है, रेस्पिरेशन चालू होता रहता है. वो भी रेस्पिरेशन भी जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है उतना ही रहता है. तो वो होता है स्टेज 3. दैट इज नोन एज सर्जिकल एनेस्थेसिया. एंड ऑल सर्जिकल procedures are carried out in the stage 3 of anesthesia. Now stage 4 क्या होता है, अगर फिर से आप डोज बढ़ाओगे तो आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा. रेस्पिरेटरी का सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा. पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल विल बी देयर.
and you will die. So stage 4 means respiratory paralysis. इसके बाद में आदमी जिंदा रहता है नहीं. जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट रहता है, जो एनेस्थेसिया का डॉक्टर रहता है, उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर ज्यादा थोड़ा भी इधर अगर डोज हो गया तो आदमी टपक गया, उसकी विकेट गई. इसलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उसका ज्यादा टाइम नहीं रहता, वो पूरा ऑपरेशन होने के बाद वही बैठा रहता है कि देखते रहता है पेशेंट को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो ही यूज्ड टू मॉनिटर द पेशेंट. सो व्हाट इज द प्लेन, व्हाट इज द स्टेज, व्हाट आर द रिफ्लेक्सेस. सो पूरा ऑपरेशन होने तक वो वहां पे बैठे रहते हैं. उसका काम सिर्फ थोड़ा ही है, मतलब उसको सिर्फ आना है, आपको एक इंजेक्शन देना है, उसका काम फिनिश. So surgical process is carried out in stage 3 of surgical anesthesia. Now we will take a next question. Which one of the following is used for dissociative anesthesia? Your options are midazolam, then ketamine, then propofol, and then fentanyl. Okay. So which one of the following is used for dissociative anesthesia? So here in case of this question, your option B is the correct answer. Okay. Option B, ketamine is the correct answer. Now we will see what do you mean by dissociative anesthesia. So dissociative anesthesia, it produces a cataleptic stage in which the patient appears to be awake, but it is detached from environment and it is unresponsive to the pain. Means क्या होता है कि dissociative anesthesia means क्या, आपको हिंदी में बोलता हूँ. नॉर्मल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि एनेस्थीसिया देने के बाद आप सो जाते हो, आपका पेन सेंसेशन जाता है, बहुत सारे सेंसेशन गायब हो जाते हैं, लेकिन सो जाते हो आप, मतलब आप सो गए, आप यहाँ पे जगह नहीं हो. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपके सेंसेशन तो सब जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग. आप देख सकते हो कि ये मेरा पैर काट रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा पैर काट रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है. मतलब आप देख सकते हो जो भी हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में, वो सब आप देख सकते हो, लेकिन आपको कुछ फील नहीं होगा. उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. यू आर डिसोसिएटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जो भी आपको हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आपको दिख रहा है कि यार ये मेरा अभी इसने इतना बड़ा ब्लेड लिया है, अभी ये मेरे पेट को काटेगा. आपको सब दिख रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आप रो भी नहीं सकते, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा आपको, सिर्फ आपको दिख रहा है. मतलब यू आर अवेक, यू आर सीइंग, यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग, यू आर अवेक, बट यू आर detached from environment and you are unresponsive to the pain. Okay, so in this case ketamine is used to produce dissociative anesthesia. ठीक है, to produce various kind of effects. Like ketamine is frequently described as a sick drug because it has a hypnotic, analgesic and amnesic property. Amnesia means loss of memory. Okay, so that's why it is a dissociative anesthesia. Dissociative anesthesia is produced by ketamine. Remember, ये सब important question है सभी के सभी. So then what is midazolam? So midazolam is nothing but it is a derivative of benzodiazepine. It is a triazole derivative. It is a triazole derivative. Okay, midazolam is also triazole derivative. It is used as a hypnotic and general anesthetic agent. Then what is fentanyl? So fentanyl is nothing but the potent synthetic opioid analgesic with short and rapid onset of action and short duration of action. So it is a mu receptor agonist. It is a strong agonist to the mu opioid receptor, and it is used therapeutically to induce the anesthesia. Often it is used along with propofol to use analgesia anesthesia. So that's why here in this case your answer is ketamine. Ketamine will produce dissociative anesthesia. Now we'll say next question. So what is PreAnaesthetic medication includes? So your options are option A morphine, pethidine, option B diazepam, nitrazepam, option C atropine, glycopyrrolate, antiemitic, and option D all of the above. So PreAnaesthetic medication includes all of the above. Okay, so here your option D is the correct answer. Option D is the correct answer. So I will explain what is PreAnaesthetic medication. Pre means prior, anesthetic means anesthesia, and medication means drugs. So if you have to use certain drugs before the anesthesia, that is known as a PreAnaesthetic medication. It is the use of drug prior to the anesthesia to make anesthesia more safe and effective and pleasant. Okay, so that is nothing but the PreAnaesthetic medication. That is a medication given prior to the induction of anesthesia to make anesthesia safe, effective and pleasant. That is nothing but the PreAnaesthetic medication. So anesthesia देते समय क्या होता है, anesthesia देने के बाद कि आपको बहुत ही स्वेटिंग होगा, आपको वोमिटिंग होगी, आपके सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपको पेन होगा. ये सब मिनिमाइज करने के लिए ड्रग यूज करते हैं
तो उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो कौन से ड्रग यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में? टू रिलीव द एंजाइटी, वेरियस एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर यूज्ड लाइक डायजेपाम, बेंजोडाइजेपिन। टू प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन, antihistaminics are used. To prevent nausea, vomiting, antiemetics are used. To prevent the analgesia, opioid analgesics are used. To prevent the bradycardia and secretion, atropine is used. Atropine or anticholinergic. Okay, so morphine, pethidine to reduce the pain, diazepam, nitrazepam to reduce the anxiety, atropine, glycopyrrolate and antiemetic to reduce the vomiting and secretions. Okay, so pre-anesthetic medication includes all of the above. Is that clear? And this was the today's 10 MCQs. Thank you very much for watching this video. अगर आपको ये MCQs चाहिए तो you can order this book from me. My numbers are given on the screen. यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है, तो प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, इसमें से काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं जीपैट में, और ये प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको नए वीडियो की, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। लाइक्स तो बनता है यार वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।